हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? आर यू फाइन? आप सब ठीक हो? गुड. सो लेट्स स्टडी टुडेज लेक्चर फॉर क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4. टॉपिक इज रिवीजन ऑफ साउंड ऑफ E, and this is lecture number 8. So before starting new lecture, let's revise previous lecture first. हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे पहले, न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी आवर प्रीवियस लेक्चर. दिस इज आवर प्रीवियस लेक्चर. ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है. एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन वर्क इन बुक. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किस में काम किया था? बुक में काम किया था. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू योर वर्क ऑन पेज नंबर 32, 33, 34, 35 and 36. Now I have given you this exercise of 33. This you have to do yourself. आपको ये खुद करनी थी. Now let's read it. P-E-T, pet. Pet means पालतू. J-E-T, jet. Jet means jet, fighting वाली jet. Okay. N-E-T, net. Net means जाल. W-E-T, wet. Wet means गीला. Now I told you to do this work. आपको ये वर्क करना था. I hope you have done it. Now second exercise. ये हमने कर ली थी. In this exercise you have to circle the words that goes with the pictures. जो पिक्चर्स के साथ जाए हमको उन वर्ड्स को सर्कल करना था. ये मैम ने आपको ऑलरेडी वीडियो में करा दिया था. ओके. नाउ पेज नंबर 35. नाउ इन पेज नंबर 35 दिस वर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ. आपको ये करना था. लेट्स रीड इट. B-E-D, बेड. बेड मीन्स बिस्तर. R-E-D, red means लाल. L-E-D, lead means साथ चलना. F-E-D, fed. Fed means खिलाना. Okay, I hope you have done it. आपने कर लिए होंगे complete. Now second exercise. In second exercise you have to paste the stickers for the given words. जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं आपको उनके स्टिकर्स पेस्ट करने थे इन बॉक्स में. और मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि स्टिकर्स आपको बुक के लास्ट पेज पे मिलेंगे. ओके. आई होप यू पेस्ट द स्टिकर्स. आपने अपने स्टिकर्स पेस्ट कर लिए होंगे. नाउ नेक्स्ट पेज इज 36. नाउ इन पेज नंबर 36 you have to match the word with its picture. So in this exercise you have to match the words with its pictures. आपको यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको वर्ड्स के साथ पिक्चर्स मैच करनी थी. और ये मैम ने आपको वीडियो में ऑलरेडी करा दिया था. सो आई होप यू हैव कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज ऑफ साउंड ऑफ ई. आपने साउंड ऑफ ई की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होंगे बुक में. गुड. So now we will start our new lecture. अब हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे. Okay, so take out your English notebook, students. So in today's lecture we will revise sound of E words. Okay students, so first we have to make a format. पहले हमें अपना format बनाना है. So write down date first. Every word you have to start from the corner. Okay, हर एक word आपको कहाँ से start करना है? Corner से. Write down D-A-T-E. Date. Date means दिनांक. Now put dash on second line. Here you have to write down date. यहाँ पे आपको अपनी दिनांक लिखनी है. Okay students. Now this side you have to write down C.W. C means class. W means work. Class work. कक्षा कार्य. Now in second line write down day. Again you have to start from the corner. Capital D-A-Y. D-A-Y, day. Day means दिन.
Now put dash on second line. Now here you have to write down day. यहाँ पे आपको अपना दिन लिखना है. Okay. Now next, what we do today? आज हम क्या करेंगे? Revision. Revision of sound of E. So here you have to write down revision. R, capital R, E, V, I, S, I, O, N. Revision. R, E, V, I, S, I, O, N. Revision. Revision means दोहराई. Revision means दोहराई. Now today we will do some big word also. हम थोड़े कुछ बड़े words भी करेंगे sound of E के. So let's start. Write down G R double E N. Green. G R double E N. Green. Green means हरा. Green means हरा. जैसे हरा कलर होता है ना. Write down next word. Write down R E D. Red. R-E-D. Red. Red means लाल. Red means लाल. Now next word. Write down B E double L. Bell. B E double L. Bell. Bell means घंटी. Bell means घंटी. W E double L. Well. Well means कुआं. W E double L. Well. Well means कुआं. Now next word. Write down T R double E. Tree. T R double E. Tree. Tree means पेड़. Tree means पेड़. N E S T. Nest. N E S T. Nest. Nest means घोंसला. Nest means घोंसला. चिड़िया किस में रहती है? नेस्ट में, घोंसले में. नाउ नेक्स्ट वर्ड. राइट डाउन L E G. Leg. Leg means टांग. Leg means टांग. L E G. Leg. L E G. Leg. Leg means टांग. Now next word. Write down P E G. Peg. Peg means clip. Peg means clip, जो हम कपड़े सुखाते वक्त लगाते हैं. P E G. Peg. P E G. Peg. Peg means clip. Now we will write our homework. Write down capital H dot W. H means home. W means work. Home, work. ग्रह कार्य. Now put dash. Write down learn. Capital L E A R N. Learn. Learn means you have to learn all these spellings. ये आपको सारी spellings याद करनी है. Now write down rewrite. Capital R E W R I T E. Rewrite. Rewrite means आपको दोबारा लिखना है. Now leave some space. Write down D T H E. D. Again you have to leave some space. Write down C dot W. Now in next line, write down twice.
दिस वर्क इज फॉर 2 days. ये काम 2 दिन का है. एंड यू हैव टू राइट लेटर्स इन प्रॉपर लाइन्स. ओके, आपको जो आपके लेटर्स हैं वो प्रॉपर लाइन्स में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड डू योर वर्क नीटली. बहुत सुंदर और साफ सुथरा वर्क करना है. ओके, नाउ वी विल रीड इट. GREEN, green. Green means हरा. Green means हरा. RED, red. Red means लाल. Red means लाल. BELL, bell. Bell means घंटी. Bell means घंटी. WELL, well. Well means कुआं. Well means कुआं. TREE, tree. Tree means पेड़. Tree means पेड़. NEST, nest. Nest means घोंसला. Nest means घोंसला. LEG, leg. Leg means टांग. Leg means टांग. PEG, peg. Peg means clip. Peg means clip. प्लीज डू लर्न ऑल दिस स्पेलिंग्स. आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है बेटा. एंड यू हैव टू राइट एवरी वर्ड इन लाइन एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर. ओके, आपको हर एक लेटर, देखो हर एक लाइन के लेटर में हमने कॉर्नर से स्टार्ट किए हैं. आपको भी कॉर्नर से स्टार्ट करने हैं. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.